Thank you so much. अगली शख्सियत जो है हमारी, उनके बारे में कुछ भी कहना, शील सौम्य स्वभाव और मधुर मुस्कान जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मैम, आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अगर सामने बैठे सभी ऐसा लगता है जैसे सुषमा स्वराज जी बैठी हों। तो आपका ऐसा व्यक्तित्व मन को लुभा देता है। आपका ऐसा प्रेरक रिश्ता, आपने साहित्य के, हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में, हमारी वर्कशॉप्स में इतना सारा काम किया, हमें आगे बढ़ाया, कई तकनीकी हमें सिखाई। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व जिससे सभी इतना प्रेरित होते हैं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया कुछ ऐसी रचनात्मकता, मुझे लगता है ये रचनात्मकता ही आपका श्रृंगार है। तो ये जो मधुर मुस्कान है, इसके पीछे जब निराला जी की कविता है ना कि राम की शक्ति पूजा, उसमें जब वो आप कहते हैं ना कि रवि हुआ अस्त अस्त अस्त, तो ऐसा लगता है कि वो रवि जो है वो किताब में, कविता में अस्त नहीं हो रहा है, उसकी आभा जो है आपके मुखमंडल पर पड़ रही है। तो वो ऐसा प्रेरक व्यक्तित्व हमारे बच्चे भी प्राप्त करें। ऐसी रचनात्मकता के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे वो ऐसा व्यक्तित्व बनाए, कृपया उनका मार्गदर्शन कीजिए। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसा कुछ खास नहीं है। साहित्य में बहुत रुचि थी, इसलिए साहित्य पढ़ा, पर एडमिनिस्ट्रेशन में इतने उलझ गए कि साहित्य और लेखन भी पीछे छूट गया। साहित्य पढ़ने की प्रेरणा ही मेरा लेखन था कि मुझे लिखना है, पढ़ना है, इसलिए साहित्य में मैंने एडमिशन लिया। हिंदी ऑनर्स में एडमिशन लिया, लिखा, कभी रुचि से लिखा, पर जो कुछ भी लिखा अपनी खुशी के लिए लिखा। कभी खुशी के लिए, कभी आंसुओं के लिए, कभी दिल के लिए, कभी दूसरों पर हंसने के लिए भी लिखा, और कभी DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने ज़बरदस्ती भी लिखवाया। एक बार नहीं, बहुत बार। मुझे DAV में काम करते करते शायद 40 साल से ऊपर हो गए। 1982 में ज्वाइन किया था, और तब से लेकर दरबारी लाल जी से लेकर अब तक मैंने बहुत चीज़ें लिखी, DAV से रिलेटेड, आर्य समाज से रिलेटेड, और जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, जब लिखने लगी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट भी पैदा हुआ और बहुत जानकारी भी मिली। पर इस लिखने के पीछे जो मेरे सीनियर्स थे, ऑफिसर्स थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं इस बात के साथ साथ आज की सूत्रधार, आज के पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर निशा पेशन, और इस पूरे कार्यक्रम को रूपरेखा देने का जो कार्यक्रम बनाया DAV यूनाइटेड के साथ डॉक्टर निशा पेशन ने बनाया, जिससे हम आज सब जुड़ रहे हैं, और हमारे आज के महानुभव जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड के, इन सब ने, संजय ने और दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट्स थे, अदिति ने, राघव ने, और अभी हमारे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये बताया कि अब सिर्फ कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक लिखने के लिए नहीं है। साहित्य की दुनिया, लिटरेचर की दुनिया बहुत बहुत बड़ी हो गई है। इस बहुत बड़ी दुनिया के मैं उदाहरण नहीं दूंगी, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारे एक नाटक के साथ भी जुड़ेंगे, तो उस नाटक के साथ जुड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? जब तक वो नाटक किताब में है तो वो कहानी सा लगेगा, जब वो नाटक मंच पर खेला जाएगा तो वो हमें, हमारी जिंदगी से ज़्यादा जुड़ेगा। तो उसके साथ कितने लोग चाहिए? स्टेज स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर्स, लाइटमैन, म्यूजिशियंस, कितने लोग जुड़ते हैं। तो हमें देखना है कि अगर हमें नाटक की फील्ड में जाना है तो हमारे पास कितने कितने ऑप्शंस हैं। फिल्म लाइन में जाना है तो कितने ऑप्शंस हैं।
प्रिंट मीडिया में जाना है या हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना है, तो हमारे पास कितने कितने ऑप्शंस हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइए, जैसा अदिति ने कहा, सबने कहा कि हम अपने शब्द भंडार को बढ़ाएं, अपनी ज्ञान को बढ़ाएं। संजय के पास जितनी इंफॉर्मेशंस हैं वो क्यों हैं? क्योंकि वो किताबों से जुड़ा है, वो न्यूज़पेपर से जुड़ा है, वो मीडिया से जुड़ा है। तो इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और उन इंफॉर्मेशन को जिंदगी में ढालना। तो आप किताबों से जुड़ें, शब्दों से जुड़ें, और अपने अंदर वो खासियत लाएं कि अभी राघव ने कहा कि मुझ में क्या था, कुछ नहीं था, पर ऐसा नहीं होता। हर बच्चे में एक पोटेंशियल है, हर बच्चे में एक पोटेंशियल है, वो हमारे टीचर्स को देखने की ज़रूरत है। जब से मैं टीचर बनी तो बच्चों को देखने की, सुनने की बड़ी अजीब सी आदत थी। कोई बच्चा उस दिन सेक्टर 49 में बच्चा बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप बेटा बहुत अच्छे न्यूज़ रीडर बन सकते हो। अभी भी मैं ये मैम से कह रही थी, बच्चा भी बात कर रहा था, तो मेरे डिबेटर्स को कैसे मैंने टेलीविज़न के साथ जोड़ा, मेरे कुलाची हंसराज के जो डिबेटर्स थे, मीडिया के साथ जोड़ा उन्हें। तो बच्चे के टैलेंट को पेरेंट्स और टीचर्स पहचानते हैं, और बच्चा खुद पहचानता। तो लिखने की प्रक्रिया की आप सृजनात्मकता की बात कर रही थी कि हमें किसी भी फील्ड में कुछ भी लिखना है तो अपने अनुभव संस्कार को उत्कृष्ट बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। खुली आंखों से आसमान को देखें, खुली आंखों से पेड़ों को देखें, पेड़ों पर चहचहाती चिड़िया को देखें, नदी देखें, समुद्र देखें, इन सारों के चेहरे पढ़ना सीखें। दीवारों पर उभरी लकीरों में चेहरे ढूंढें, और फर्श पर, टाइल्स पर बिखरी लाइनों के बीच में चेहरे और चेहरों के भावों को पढ़ना सीखें। जब इतनी भावों के समुद्र में डूबना सीख जाएंगे, हमारी संवेदना, हमारी भावनाएं इतनी गहरी होती चली जाएंगी, तो कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि दूर नहीं रहेगा कि आप उन सारे भावनाओं के समुद्र से निकलकर अपनी लेखनी तक ना आए। तो अपनी संवेदना के संसार को जगाएं, लिटरेरी सेंसिबिलिटी को जगाना जरूरी है। आपको बहुत चीजें अच्छी लगती हैं, खुलकर अप्रिशिएट करना सीखें, मन को दबाएं नहीं। जो सुंदर है, जो अच्छा है, जो गलत है, उसको क्रिटिसाइज करना भी सीखें। हम मन की भावनाओं को मन में दबा लेते हैं, मन की भावनाओं को मन में दबाते हैं तो चेहरे पे तो आ ही जाती हैं, तो चेहरा किताब बन जाता है। तो चेहरे को किताब ना बनने दें। चेहरा तो किताब है ही। अपने जो कुछ अनुभव संसार आपने अर्जित किया है, उसे किस रूप में डालना चाहते हैं? गीत में, संगीत में, फिल्म स्क्रिप्ट में, नाटक में, कहानी में, कविता में, ब्लॉग राइटिंग में, ट्रेवल लॉग्स में, कितने ऑप्शंस हैं। यूट्यूबर बन जाइए और अपने आसपास की दुनिया को यूट्यूब के माध्यम से अपनी हंसी, अपनी खुशी सब उसमें शेयर कीजिए। अभी जो बात कर रहे थे, कि अभी अरुण जी बात कर रहे थे कि हम जो कुछ भी बने, हम श्रेष्ठ बने, कुछ सोचते सोचते बन जाएंगे, तो अपने अनुभव संसार को बड़ा करते करते हम उसे अभिव्यक्त कैसे करें? अनुभव एक कला के 3 क्षण हैं। हर कला के, सिर्फ लिखने की कला नहीं है, वो गीत है, संगीत है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कितने कला के क्षेत्र हैं, और सब पर हम बात आज नहीं कर पाएंगे। तो जब हम अपने अनुभव के क्षण को गहनतम बना लेते हैं, उत्कृष्ट बना लेते हैं, तो वह अनुभव का क्षण हमारे थॉट प्रोसेस के साथ मिल जाता है।
उसे मिलाइए, उस पर सोचिए, विचारिए, ये क्या है, ये क्यों है। आपकी लिटरेरी सेंसिबिलिटी कहाँ जाकर जुड़ गई? आपके साइंटिफिक एनालिसिस के साथ, कि क्यों है, कब है। आपकी ऑब्जर्वेशन आपके एनालिसिस के साथ जुड़ गई। तो जो आपने अनुभव किया उसे थॉट प्रोसेस का साथ मिला देंगे तो एक बड़ी सी सुंदर सी फैंटेसी आपके सामने खड़ी हो जाएगी, कि जहां आपका वास्तविक जीवन भी है, आपका वस्तुगत जगत भी है, वास्तविकता भी सामने है, पर आपके विचारों के साथ, आपकी भावना के साथ, आपकी कल्पना शक्ति भी खूबसूरत ढंग से जुड़ी हुई है। तो उस फैंटेसी को क्या करना है आपने? उस कल्पना जगत को क्या करना है? अभिव्यक्त करना है। कैसे? ये निर्णय आपका है। गाकर करें, संगीत की लहरियों में करें, वीणा के वादन से करें, आप कलर्स, बहुत सारे, बहुत बड़ा कैनवस है अभिव्यक्ति का, कि आप रंग बिखेरें, रंगों के माध्यम से दें, या साहित्य की भिन्न भिन्न रूपों के माध्यम से अपने उस उत्कृष्ट अनुभव को विचारों की आंच में दबाकर अभिव्यक्त करें। तो वो अभिव्यक्ति आपकी इतनी सक्षम हो जाएगी कि वो एक एक के दिल पर उतर जाएगी। आपके दिल की आवाज दूसरों के दिल की आवाज बन जाएगी, और जो सुनने वाला है, पढ़ने वाला है, देखने वाला है, वो वाह कह ही उठेगा। तो हमें अपने अनुभव संसार को बड़ा करना है, अपने परिवेश से जुड़ना है, और इन सब से जुड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही कहा, लिटरेरी सेंसिबिलिटी, अपनी संवेदना को तीव्र बनाएं। हमारी संवेदना तीव्र बनेगी जब हमारे अंदर इंसानियत तैरती नजर आएगी, ह्यूमन वैल्यूज नजर आएंगी। आप जितने अच्छे इंसान होंगे, जितने प्यारे इंसान होंगे, जितनी हम दूसरों की, जो समाज के जो बचड़े हैं, उनसे दूर नहीं रह सकते। उसके बीच में जाकर हमें जीना है, और बीच में से जाकर उस कीचड़ से कमल खिलाकर लाना है। हम उसका भी वर्णन कर सकते हैं। आपको अगर आसपास अपने क्षेत्र में गंदगी दिखाई देती है, चाहे कूड़े की हो, चाहे इंसानों के सोच की हो, या आसपास के परिवेश की हो, चाहे इस पोल्यूशन की हो, हर तरह की गंदगी के बीच में जाकर हम जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे हैं, तो फिर हम दूसरों को जागरूक बनाने के लिए, खुद सिखाने के लिए इंसान और इंसानियत से प्यार करने वाला हो, शब्दों से प्यार करने वाला हो, शब्दों से जुड़ने वाला हो, भाषा रखने वाला हो। हमारी भाषा तो खराब हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटर की भाषा बहुत खराब हो जाती है, तो हमारी भाषा जो है साहित्य की भाषा से उतरकर हम बोलचाल की भाषा तक आ गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं उसे भी बहुत गलत नहीं समझती, पर कभी कभी अपने पर प्रश्न चिन्ह लगा देती हूँ। तो इस तरह से हम अपने जीवन और जीवन समाज, अपने परिवेश, अपने देश और अब देश की सीमाओं को तोड़कर भी जिस पर्यावरण से जुड़ना चाहें उसे अभिव्यक्त करें, जिस शैली में अभिव्यक्त करना चाहें उस शैली में अभिव्यक्त करें, और देखें कि आप भी एक रास्ता दिखाने वाले लेखक, संगीतकार, गीतकार, साहित्यकार कुछ भी बन सकते हैं। तो रास्ता आपने देखना है, मंजिल आपने तय करनी है, रास्ते पर आपने चलना है, अपना रास्ता आपने देखना है, पर उस रास्ते पर चलते चलते अपनी मंजिल को छूते छूते आप दूसरों को मंजिल दिखाने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले भी बन जाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही धन्यवाद। आपका जो मार्गदर्शन है वो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो वैज्ञानिक सीवी रामन जी ने जब समुद्र पर नीली आभा को देखा तो उन्होंने रामन प्रभाव एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और इतना फेमस हुए।
तो उनका यही कहना था कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, बस चेतना चाहिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो इसी तरह से हमारे आसपास भी इतने, जो मैम ने बोला, इतनी भावात्मक स्थितियाँ, दीवार पर देखो, यहाँ देखो, मनुष्य में देखो, इतने भाव है। तो हमें हर स्थान पर आवश्यकता है भावों को देखने की, भावों को, उसके बाद उन भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम कुछ भी हो सकता है। ओवर टू मैम। 1 मिनट मैं पहले बोल दूँ कि राघव और अदिति की बात का भी जवाब दे दूँ, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़ी खड़ूस प्रिंसिपल रही हो। और राघव को मैं डांटती, आते जाते क्लास, ऑब्जर्वेशन, टीचर्स की रिपोर्ट, सब कुछ अपने मन में बिठा के इसकी लीडरशिप क्वालिटीज देखी। और जब लीडरशिप क्वालिटीज देखी तो मैंने कहा यस शी कैन बी अ हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, और बनाया। सबने हाँ की जब मैंने तर्क से किया। तो मेरे लिए कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी के लिए कोई ना खराब वो है। हमारा मैम जानती हैं तुषार को, तुषार के 10th में 56% थे और वो अपना एडमिशन कराने रेयन इंटरनेशनल से वो खुद आया। जो तुषार मैजिशियन है, फेमस मैजिशियन, जस्ट यू कैन चेक द फेसबुक ऑफ फ्रॉम योर मोबाइल एंड हाउ ही इज डूइंग। वो तुषार के टीचर्स ने कहा कि मैम ये पढ़ता नहीं है। मैंने कहा बट ही कैन मैनेज 4000 स्टूडेंट्स ऑल लोन विदाउट माई सपोर्ट, कैन यू? क्या टीचर्स 4000 बच्चों को एक अकेला टीचर मैनेज कर सकता है? वो टैलेंट सब में नहीं है। प्रिंसिपल भी डांट देगी, चुप हो जाओ। पर उसके पास एक आर्ट था, एक कला थी, जिसने बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया, मैजिक शो में इन्वॉल्व कर लिया, अपनी बातों में इन्वॉल्व कर लिया, उनको हंसाने में, ताली बजाने में, उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया, वो सबसे बड़ी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज थी। मैंने उसे हेड बॉय बनाया। सब मैं नंबर सब कुछ नहीं है। आप बच्चे प्यारे बैठे हैं यहाँ कि आपके 80% आए, 90 आए, वो हमारे लिए बहुत सारे एंटर करने का क्राइटेरिया है। संजय ने कहा वो भी ज़रूरी है क्योंकि हमें बेसिकली वो सब चाहिए। और दौड़ है दुनिया की। आपके पेरेंट्स भी कहेंगे कि प्रिंसिपल होकर क्या बात करती है कि नंबर कम लाओ या ज़्यादा, पर अपना टैलेंट ज़रूर बढ़ाओ, और जहाँ जो आपको अपना पोटेंशियल दिखता है उसको ज़रूर आगे बढ़ाओ। और लिखने का पोटेंशियल सब में है, सब में है। जितना बढ़ेंगे उतना पोटेंशियल भागेगा, उतना आगे आएगा। हाँ जी। Thank you so much, ma'am. I definitely feel that our audience would like to. We'll take up a few questions. Yes, Vidin, I can see it. संजय अपनी किताब के साथ संजय सर से अनुरोध है कि कृपया अपनी पुस्तक के साथ मंच पर पधारें। आपका हार्दिक अभिनंदन है सर। So first of all, ma'am, the thing I would want to ask is that I have lots of ideas, but where the problem occurs is that right now we're having a word limitation. I know when you later become an author, you don't have that kind of word limitation, but right now, yes, we do have that word limitation and we cannot exceed it. I have lots of ideas, and when I pen them down, it seems like it could go on forever and ever. So, I want to ask, how can I express my thoughts in fewer sentences, fewer lines, and fewer words, but still they come across clearly with my readers? You have lots of ideas. Yes, ma'am. But you have limit of words. Right now we do. Right now. No need to, I think, go into the limited words. Just play with your ideas, think about your ideas. जो उतने भी आपका सोच विचार है, just think about that, और उसको एक पेन कलम लेके, कागज लेके जॉट डाउन करो। अभी लिमिट के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है। हो सकता है कि उन आइडियाज में आपकी रेपिटेशन भी हो, उन आइडियाज में आपके इमोशंस ज़्यादा पावरफुल हो रहे हों, आपके जो दूसरों की कही हुई बातें पावरफुल हो रही हों। आप सारे आइडियाज जितने भी आते हों, आप उनको कलम से कागज पर उतारिए। आप शब्दों की सीमा पर ध्यान ना दें। कितने भी शब्द आए चिंता नहीं है,
फिर आप उसका एक और ड्राफ्ट बनाइए और उसमें से जो आपको रिपीट लगता है उसको अंडरलाइन करिए, उसके शब्द जहाँ दोहराए हुए लग रहे हैं, जहाँ लग रहा है इमोशंस या आपका जो लाइंस हैं, जो थॉट है वो बार बार आ रहा है, उसको फिर एडिट करना भी खुद सीखें, उसको एडिट करें, ठीक है। और ये देखें कि आपको एक बार एक सोच आ रहा है कि प्लेग्राउंड में खेलते हुए बच्चों का, एक थॉट आ रहा है कि पेड़ पर चढ़ता हुआ बंदर छलांगे मारता कैसे लगता है, एक थॉट आ रहा है कि ये मोदी जी का स्वच्छ भारत कैसा है, आपको वही बातें आ रही हैं। एक आपके मन में कुछ ह्यूमर आ रहा है, कोई सटायर आ रहा है, तो आप उनको बाइफरकेट करें। एक इमोशंस का जिसका एक उसमें एक रिलेशन है, एक क्रमिक विकास है जिसका, उस इमोशन को आप लीजिए, उस भाव को एक एक करके उसकी कैटेगरी बनाइए। आप मन में सोच लें कि ये स्पोर्ट्स का है, ये नेचर का है, ये ह्यूमन वैल्यूज का है, ये किसी के रिएक्शंस का है, ये फेस रीडिंग का है, ये सोसाइटी का है, ये पॉलिटिक्स का है, ये ह्यूमर है, ये सटायर है। आप उसको बाइफरकेट करें, फिर आप उसको एक चीज एक खाने में रह गए उसको लिखने की कोशिश करें। बहुत सारे मिलीजुली जो इमोशंस हैं उसको एक साथ नहीं उतार पाएंगे, उसको अलग अलग करके उन इमोशंस को अलग अलग चीजों में, तो आपकी 20 कविताएं बन जाएंगी, 20 कहानियां बन जाएंगी। एक मुक्तिबोध की कविता है, कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं, मुझे एकदम लाइनें याद नहीं हैं, सिर्फ उसको मैं अपनी भाषा में सुना रही हूँ। घर पर रहता हूँ, बिल्कुल शब्द जोड़े तोड़े हुए हैं, एक कविता उनकी पता नहीं कैसे मुझे याद आ गई। घर पर रहता हूँ तो कविताएं निकलती हैं, घर से बाहर निकलता हूँ तो कहानियाँ बन जाती हैं, चौराहे तक पहुँचता हूँ तो उपन्यास बन जाते हैं। तो किसको कैसे अभिव्यक्त करूं? तुम्हारा जो सवाल है मुक्तिबोध ने भी 50 साल पहले उठाया था कि इतने विषय हैं, विषयों की कमी नहीं है, इतने टॉपिक्स हैं, इतने विषय हैं और कठिनाई है चयन की। तो उन विषयों को ठीक से चूज करें और बाइफरकेट करें, फिर एक एक करके अपने इमोशंस को सुंदर भाषा में अभिव्यक्त करें। Thank you. God bless you. Thank you, ma'am, for your valuable suggestions. Thank you. Hello. Ma'am, I would like to ask a question to Ajay sir. जी. Good morning, sir. Hi. एक बार अच्छा ओके. Sir, I'm Rudraksh Sharma from 10th F and I'm a really big fan of yours. Thank you, sir. And of your voice. And even I have heard your X-radio, that was wonderful, if I'm correct. Yes. Sir, your voice really fills me with enthusiasm and excitement. And even other millions of hearts who are in NCR and across the nation. Sir, but I have a question, like nowadays, you know, in our today's society that every second child is burning his or her midnight oil in order to pursue admission in IIT or AIMS, and in many other, I would say, institutions by spending their whole day in the coaching centers like FitG and many others. Sir, I have a question, like we want to get in multinational companies because there are many other factors, but sir, is the working environment is like multinational companies in the radio station, and the offers which are means I want to say that packages which are offered to us is like multinational company, and what are the chances of growth in the same radio jockey job? Sir, now I would like to have your opinion. Thank you. Okay. First of all, let me brief your question. Paisa. That's all. है ना, यही पैसा. Okay. So, yeah. बहुत बार ऐसा लगता है कि क्योंकि हमने ऐसे जॉब्स और ऐसे प्रोफेशन के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, तो हमें लगता है कि यार ना मगअप करना और सारी चीजें करना, उसके बाद में बड़े बड़े इंटरव्यूज देना और मल्टीनेशनल कंपनी में ही पैसा है, राइट? यही परसेप्शन है. जी सर. ओके.
let me tell you, radio jockey is a profession जहाँ पर rare of the rarest profession में तो सबसे पहले आता है. जैसे किसी शहर के DMs चुने जाते हैं ना कि इस शहर का ये DM है, तो ये वैसा कुछ है. एक बार वो अपॉइंट हो गया, उसके बाद वो हटना नहीं है, और वो चुना भी बहुत लाखों करोड़ों में से जाता है. और वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स. हाँ, और सबसे जुड़ता है. और बहुत ऐसे एग्जाम्पल भी रहे हैं जहाँ पर रेडियो जॉकीज टर्न्ड इनटू नेतागिरी भी, वो उनका अपना है. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें ऐसे भी मिलता है और ऐसे भी मिलता है. और रही बात वर्क कल्चर की, वर्क कल्चर इज द कूलेस्ट वर्क कल्चर, जहाँ पर मैं अपने मेल 10 दिन नहीं चेक करता, एंड जो मेरा बॉस है वो आता है, मुझे अच्छा लगता है, वो पैरों में पड़ा हुआ है. बट देखो एक जोक देखिए, एक्चुअली क्या है ना, मैं और मेरे प्रोफेशन में ये सारे जोक्स मेरे रेडियो पर काम आते हैं, क्योंकि लोग कनेक्ट करते हैं. कहीं ना कहीं लोग अच्छा जहाँ कल्चर है, जहाँ मैम जैसे बॉसेज है ना, बहुत बढ़िया है. लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पर लोग बॉस से पिस्ड ऑफ है, उनको लगता है अरे यार ये क्या है. आपको मैं बताऊं, जिस दिन हमारा एक वीकेंड शो होता था जहाँ पर ये होता था कि बर्न आउट, उसको बोलते थे हम बर्न आउट आर. तो बर्न आउट यानी कि जिससे भी आप जलते हैं, आप बताइए, हमारे पास 99% कॉल्स को बॉस के लिए आते हैं. तो हमारा काम ही है कि आपके अंदर जो चल रहा है, जो और नहीं सुन रहा, हम खाली बैठे, हमको सुना दो, हम इतने वेले. तो ये सारी चीजें हैं. प्लस इसका पैसा उतना ही है जितना आप विटी होते चले जाते हैं, जितना आप लोगों से कनेक्ट होते चले जाते हैं, जितना लोगों की साइकोलॉजी को समझना. ये अभी मैंने जो बॉस की बात बोली, ये अंडरस्टैंडिंग दी साइकोलॉजी है. जैसे एक जोक, चुटकुले का इंटेंशन आपको हंसाना, आपको थोड़ा सा गुदगुदी कर देना है. अगर हम जोक की बात करें तो इट कम्स फ्रॉम सरकाज़म. उसका प्रोसेस ही ट्रेजेडी है. कोई भाग कर आए, और मैं आपको बताऊं कि मेरा दोस्त है, एक शीशे की दीवार से टकरा गया और शीशा टूट गया, ये हंसी आती है. लेकिन जब उस समय हो रहा होता है वो ट्रेजेडी है. तो ये सारी चीजें, कन्वर्जन कैसे आपको लेना है हालातों का, भावनाओं का, ये इस प्रोफेशन में है. एंड आई गेस मैंने आंसर कर दिया आपके. जी सर, थैंक यू वेरी मच. जी, बाकी मैं मैम के इस रिक्वेस्ट पर, क्योंकि और सर इत्तेफाक की आपने बात की थी, ये इत्तेफाक है एक्चुअली कि हम आज ही उड़ान और उड़ने की बात कर रहे हैं. और मैंने कविता लिखी थी उड़ान, ठीक है. अच्छा, वैसे मैं पता नहीं क्यों लिटरेचर, आज कविता बाहर आ रही है, आज कवि वो बाहर आ रहा है. पहले मैं एक कवि बना, फिर मैं एक शायर बना, फिर उसके बाद में एक रेडियो जॉकी बना, फिर उसके बाद में इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट एंड डबिंग, वो सब चलता रहा. तो ये आप सब लोगों के लिए, बच्चे जितने भी हैं, इस कविता का शीर्षक ही उड़ान है. नजरों के सामने है सफेद कोहरा, रास्ते लंबे हैं जानते हैं. नजरों के सामने है सफेद कोहरा, रास्ते लंबे हैं ये जानते हैं. काफिला उस सफर का रख सके जो बड़े कदम तो बेहतर होगा. मेरे मन के मौसम ना बदले तो बेहतर होगा. वादे भी अटूट रहे, इरादे भी मजबूत रहे. मन ही है जो बह गया तो फिर क्या होगा. पता नहीं ये मैं ही हूं या और भी कोई ये सब सोचता होगा. उड़ान भरने को लंबी सी पंख पसारता होगा. पंख पसारिए, उड़िए. ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस. थैंक यू. Sanjay sir would like to present his books to Nisha ma'am, and ma'am is presenting. Ma'am will be coming again.
So we have the writer and the publisher on stage along with the other esteemed guests. And the complete theme of today's program seems to be just spreading your wings and flying. Yes, sir. Thank you so much, Nisha ma'am. Thank you so much, ma'am. Yes. I'll request Anjali ma'am. These are for our school library. Thank you so much, all the panelists, for this wonderful conversation that we had, different fields of literature. And now let's move ahead with our program. Let's give them a very loud round of applause, ladies and gentlemen, for a beautiful technique. Absolutely spectacular. Everybody was totally spellbound. And now it's time to move on. The galaxy of intellectuals have provided us with their inputs as well as greatly helpful advice as to how to proceed further in this highly opportunistic sphere, that is, the sphere of literature. I thank all the panelists for their guidance at this very juncture of our lives. A writer is by nature a dreamer, a conscious dreamer. I take this opportunity to welcome DAV Sector 14 alumnus Sir Harikumar Krishnamurthy, who is often addressed as Horror Kumar. He is a screenwriter and best-selling author of spine-chilling horror and psychological thriller fiction. He specializes in writing creepy stories, strong psychological reasoning. His book, India's Most Haunted, comprising 50 short stories, has been deemed by the Times of India as a must-read horror book. His psychological horror, The Other Side of Her, spawned the web series Brown. His book, That Frequent Visitor, was the only novel written by an Indian writer to be featured on Amazon's list of best-selling horror titles. He has also penned the Malayalam feature film E. Dogma, his psychological horror, has been acquired for screen adaptation by national award-winning filmmaker Mr. Sanjoy Rao. What an honor to have him amongst us. I request Ms. Charu Menon to escort Sir Harikumar onto the stage and accord him with a planter and memento presented by Nancy Drew. Nancy ma'am is doing the honor as Charu Menon ma'am is not presently here. Hari. Yeah. As we're talking about writers, we're talking about poets, we're talking about publishers, now I am going to say with great sense of pride, he was my student. I taught him in 11th and 12th, and Hari was equally tall, so I can say as a teacher, even then I had to look up to him. He's such an amazing person. The whole of DAV Sector 14 just loves him. Whenever we just give him, he's just a phone call away, ma'am. He just
He may be in the middle of a meeting, he may be in Mumbai with directors, but you call Hari and say, there's a program in DAV Sector 14, ma'am, I'll be there. Not even I'll try, I'll be there. He catches a flight and he comes. We all love you, Hari, so much. We're so proud of you. It's your stage time. I'm not going to take any more of it. If you want to be on the podium, you can be there, or if you want to stand here. Let's give a loud round of applause for our Hari Kumar. So, good afternoon, everyone. I'm not a writer right now. I'm not a screenwriter. I'm not a film person. I'm a student of DAV, and I am actually feeling like a student right now because I'm back here once again after a very, very long time. So, thank you to the organizers, to Principal Ma'am, to everyone out here for inviting me here. So, I'd like to talk about my latest book, Dakma, published by HarperCollins India, and before that, I'll just play a small trailer of the book. Can we have the lights off? मुझे पता है अभी तक मूड थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा चेंज हो गया है बिकॉज लाइक यू ऑलरेडी सीन आई एम अ हॉरर राइटर, तो मेरा पूरा ही एक डार्क शेड में ही चलता है सब कुछ. एंड सिंस आज उड़ान की ही बात कर रहे थे, एंड डाकमा इज ऑल्सो लूजली बेस्ड ऑन उड़ान ओनली, उड़ान ऑफ द वल्चर, जिसको स्कैवेंजर, द गिद्ध जिसको कहते हैं. बट कमिंग बैक टू Dakma, I'd like to read out a paragraph from the book before I give a very small speech. तो नहीं है, but एक छोटा सा अपना एक point of view रख के then I'll be signing off. First of all, horror कितने लोग पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? स्टीफन किंग ही पढ़ते होंगे ना, है ना? I think our school library should start promoting Indian horror writers, not just Indian horror writers, Indian writers. Please move over. I mean, obviously Stephen King is the best, but please start reading Indian writers as well.
So I'll be reading the prologue, the first paragraph from my book Dagma. थोड़ा सा dark है, but apologies because it's a school and but still I really love this paragraph, so that's the reason why I'm going to read it. Death. It instills in one a feeling that whatever happens, just happens. Different people have different theories, and for ages, humankind could not decipher its mysterious nature, neither through specters of religion, nor through spectacles of science. Death. It confirms that at the end of the day, this has just one purpose, an inevitable end. All those curiosities of infanthood, obsessions of adolescence, and ambitions of adulthood just spiral back into a womb of nothingness. Death. Death. It negates the existence of infinity and the absence of the infinite. All the tenets that become the basis of religion and philosophy simply vanish, and the claim of knowledge of the unknown validates uncertainty of the highest degree. The mind fears the unknown, and it becomes jittery when it has to ponder about death. People fear death and what happens after that, or perhaps what happens to the person at that precise moment. So this is how I begin my book, and I hope those who love horror should definitely pick this up and read Dagma. And we are also working on a web series. Hopefully it should come out next year. And I read The Alchemist in 2006. I got the book from the DAV library, the school library. I got two books actually. One was The Alchemist, and then Da Vinci Code, which was a bestseller at that time. And in Alchemist, Paulo Coelho, he begins the book with a preface, with an introduction, and it reads something like this. This is what he has written in the book. How many of you have read The Alchemist? Okay, so most probably you must have read this introduction as well. So Paulo Coelho says that I remember receiving a letter from the American publisher HarperCollins, which said that reading The Alchemist was like getting up at dawn and seeing the sun rise while the rest of the world still slept. So I went outside, looked up at the sky, and thought to myself, so the book is going to be published in English by HarperCollins. So when I read this particular paragraph at that time in 2006, वहाँ पे मुझे मेरा एक सपना सा एक स्टार्ट हो गया कि मुझे भी HarperCollins के साथ ही I want to get published by HarperCollins. And when I wrote my first book, I finished my manuscript in 2011. This was during the final year of my engineering. 2011 में manuscript लिखने के बाद I sent it to HarperCollins क्योंकि मेरा सपना था कि HarperCollins के साथ ही publish हो वो book. But after waiting for 6 months, 7 months, I don't even remember now कितने महीने wait किए. Finally एक reply आया कि sorry, we cannot publish this because this doesn't meet our criteria right now. Good luck with other publishers. This is the standard reply. I think the publisher here would be very, very, accustomed to, the editor will be accustomed to sending this kind of emails. So, second book, 2013 में Frequent Visitor. Once again, सबसे पहले HarperCollins को ही भेजा. There was no reply this time. Third book, which became Brahm, the web series with Kalki, वो भी मैंने HarperCollins को ही भेजा था. Once again, they rejected it outright. No, this doesn't look like something that we would like to publish. So 3 books, 3 misses. Obviously, they were picked up by a very good Indian publisher, but HarperCollins was my dream because HarperCollins is the world's biggest publisher. HarperCollins is part of the big 5, Penguin, HarperCollins, Simon & Schuster. So HarperCollins was where I wanted to get to. So 3 books हो गए. Then I was working at that time. I got an opportunity to write a film, so I quit my corporate job. I went back to Kerala. My first film was in Malayalam, a horror film. And by that time, I was kind of set in that horror mold. क्योंकि my second और third books दोनों horror थे. First book में भी एक horror element है. And then film के shooting के time एक बार मतलब खत्म हो गया था almost. हम कुछ pending stitches कर रहे थे. तभी एक email आया मेरे पास दोपहर को. And it was from an unknown person.
मैंने खोला तो देखा कि यार it's some editor who has inquired if I'd be interested to write a collection of horror short stories, and नीचे देखा publisher का नाम HarperCollins. But even right now, while I'm sharing this experience, I am getting some kind of goosebumps. But this actually happened, and I remember what Paulo Coelho had mentioned in the beginning of The Alchemist, receiving that letter from HarperCollins. And this was not you sending a book or a pura likha hua manuscript aapne bhej rahe. It's a commission project where you have been contacted by the publisher to write a book. Obviously, there are a lot of restrictions in a commission project because you have guidelines, you have to follow the strict guidelines. But that happened. So मुझे बस इसमें एक ही चीज़ ऐड करना कि मैं उनकी बात सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले. उन्होंने कहा था कि लाइफ में सक्सीड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है. नॉलेज, एब्सोल्युटली उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, यही 3 आपने कहा था. इसके साथ एक और चीज़ चाहिए है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है परसिस्टेंस. To keep making those persistent efforts without failing. Try karo. I think Aditi was the one who said, "Hadbadi mein mat raho, but keep on trying." Someday your arrow will, or the dart will hit the target. And उसके लिए मुझे I'll mention Anita ma'am here, और principal ma'am उस time जब मैं पढ़ता था, head boy का interview में मैं भी गया था देने के लिए. तो उस टाइम मैम ने, एंड आई वॉज वेरी एमलेस एट दैट टाइम, आई स्टिल एम. उस टाइम मैम ने पूछा था, हरी व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर गोल इन लाइफ, एंड आई डिडंट नो, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही गोल था कि पढ़ना है, लिखना है, नंबर लेके आने, फिर जॉब पे जाना है. एज अ साउथ इंडियन इन एनसीआर, दैट्स द प्राइमरी एम दैट यू हैव इन लाइफ. बट उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाया. तो मैम ने मुझे एक चीज बोला कि हरी, इफ यू वांट टू हिट द टारगेट, प्लीज एम हायर. And to not just, but in order to hit that target, you have to make those persistent efforts. So I'll conclude whatever I have to say here, and I'd request, how many of you are trying to write a book? I'm not even going to ask about poems or anything, but books, किसको लिखनी है? क्योंकि poems, I mean, it's just 2-3 pages या जो भी है, but book is something where you need a lot of एफर्ट. इतने सारे लोग हैं, और कितने लोगों ने कंप्लीट करी है? कब कंप्लीट करोगे? सो कीप मेकिंग दोस एफर्ट्स, क्योंकि लिखने के बाद एक्चुअली यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट इज द बिगर चैलेंज. क्योंकि लिखना एक्चुअली सबसे आसान है, राइट? So thank you very much for having me here once again, principal ma'am, all the teachers, Nisha ma'am, thank you. Thank you so much. And now he says, don't call me Hari Kumar, call me Horror Kumar. So thank you so much, Hari. So, your writing, accompanied by your reading skills, truly redefined the word multi-talented for us. Talking about multi-talented though, to further enhance the glory of this literature conclave, we have with us Ms. Damini Rathod, a phenomenal poet and author. Her debut work, In Good Hours with Frost, suits not only the mood today, but also proves her sheer quality as a writer. Nothing could give a better summary of the book, a monologue with poems woven into a short story, than Ma'am's words herself. She describes it as the journey of the protagonist, Frost, through not only depression, but also societal conditioning, love, attention, abandonment, world peace, and a lot more. It's an engaging and enriching one-go read that we recommend to everybody present here. Ms. Rathod is an alumna of DAV Public School Sector-14 and did a graduation in BA History Honours from Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. So, without making any of you wait any longer, I would request Ms. Nisha Kaushik to please accompany Ma'am Damini to the stage and welcome her with a planter and memento by Ms. Havisham from Great Expectations.
Damini, you may take the podium. I think our audience needs to be a little more energized. Let's give it up for her. She was in the school just like you in this uniform, always with a novel in her hand, and now see where she is. So let's hear from Damini. Can I have my music now? Sorry? My music. It's, you would like the hand mic or? No, this is fine. Yeah, music. My association with DAV began in 11th grade. I came to this school as a curious, stereotypical, but a hardworking person. All I knew were my books, teachers, school, my sister, exams and stress. Little did I know, in these 2 years I would transform out of my bubble towards becoming a girl more curious, less stereotypical, more hardworking, with diverse interests. A confident, yet an understanding girl with gratitude towards her teachers, friends, and classmates, with immense love for everybody else, has now learned to be a lot kinder to herself. And right now, here, overwhelmed by this warming space, I feel I'm still becoming something in your guidance. As little birds flapping our tiny wings in the sky of opportunities for directions. Sometimes, unfortunately, we are alone in our journeys. As I even say so, I can see a flock of my favorite birds coming towards me and joining me for the company. Happily, this way, we are constantly being cushioned and encouraged by our friends, family, and teachers to sail through the disturbed seas despite the fact that they are themselves on a similar journey. They have been through thick and thin on the creaking boats. It is these guardians who choose to become our angels against all odds, and I feel a cliff in my heart. I often stumble upon piles of overthoughts and keep falling off a cliff into a trench with no grounds. I assume you fall too. It feels like my body sinks faster than my other parts. My soul and my senses follow, but everything eventually falls. My aroma intelligently builds a trail for others to trace and rescue. I assume you have been there too. But notice, every time, all this while, there is someone and a few who relatively see you and with love encourage you to pursue the moon. They pick up your paths for you without letting you know they're falling to a cliff in my heart, and there's one in yours too. It is these beautiful angels who constantly tell us that you're beautiful. But after all, it is the evolution in mind perspective, an optimistic angle of attitude that makes all my scars look prettier on me, and I carry that look accessorizing with a smile. My fractured histories, a bag full of fragmented confidence as my assets, and all of that with a fling. You are beautiful. Something has changed. I feel beautiful every single day. Even with pathetic moods, frizzy hair, invented moons, toothless smiles, all my complaints, and even in the absence of you, I feel beautiful. I'm not the person I was yesterday. Now I travel without plans.
I'm forgetting days and people. I'm learning, unlearning at the same time, shedding parts of me and earning some. I feel it so strong. Maybe it's the readjusted mirror in front or the lights. I feel a perfect illusion. I'm not exhausted by transitions, but comforted by the warmth of this newfound home within my own doors. And I feel I'm the most beautiful person I have ever known. Before I deliver my last piece, I request you to please close your eyes. We'll do this together. Please close your eyes. Recall a happy memory of a person or a place. Try to relive it over and over. Now slowly open your eyes, feeling comforted. I present my last piece as a note to this happy memory of yours. I remember you. The blue-white tapes in my music shelf are undusted as those memories. And my feet are trained to routinely walk the passageway that we created, pedaling the yellow grass every day to our workplace. Do you remember? I recall how the transitions. I recall how the trail of my apprehensions, whispers of my blinking emotions, my idiosyncrasies and your eccentricities, my funny dances and your perfect songs entangled, and how while diving in woods and waters we met, and it all mattered. Do you remember how composed it moved? It's a universal truth. Someday I will be gone, and so will you. But the essence of our presence will combine every possible corner in this space like a timid fragrance, only to be re-identified whenever we visit again. Hopefully, these memories will remain, and so will the essence in parts relevant to me and those to you. And if you don't or can't, stay on trouble, because I will remember you. I will remember you. Thank you. Thank you so much, Mandy. Soothing words, an even more soothing voice, and beautiful soothing music in the background. We couldn't have asked for more. Thank you, ma'am, for your captivating words. The one person who can showcase a beautiful mixture of simplicity, style, and conciseness, along with morals and values, is an author. The time is now or never, a philosophy believed by our next guest, Ma'am Prachi Sachdev. She is a phenomenal author, poet, copy editor, fashion blogger, graphic designer, trained in mixed media and Asian art, and yes, a photographer. What a versatile personality! She began writing ebooks during the first lockdown when the whole world had come to a halt. She is a fearless writer who does not hesitate to write about the topics which are not openly talked about. A passionate storyteller, Ma'am specializes in crafting women-centric poetry in two languages, Hindi and English. Having penned many wonderful books like Hey Girl, Yes You, Manu Trishna, and How to Survive a Lockdown Without Losing Your Mind, Ma'am has further added to her repertoire. Being a DAV Public School Sector-14 alumna, she is an inspiration to hundreds of DAVians. I request Ms. Charumani to escort Ms. Prachi onto the stage and accord a green welcome to her with a planter and memento presented by Shakuntala from Abhijan Shakuntala.
Welcome, Prachi. The stage is all yours. Hi, I hope you guys can see me. Hi, Jyoti. But, like coming back to DAV, I have been heard a lot of times for different workshops. Jaya Bachchan and Amitabh Yadav. Coming back to DAV is like coming back to my home because ours was the second batch and I would say we were the naughtiest और टीचर्स का इतना प्यार मिला है कि अभी लगता है जब टीचर्स को मिस करते हैं स्कूल डेज मिस करते हैं यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है एंड आई वुड से जो ये राइटर और ब्लॉगर बनने की जर्नी है मेरी DAV से ही शुरू हुई थी इनफैक्ट देयर इज वन टीचर आई वुड really like to thank from the bottom of my heart. She's not here today. Sudha Gupta ma'am, she was our English teacher और उन्होंने मुझे I started by writing answers on my own. बच्चे टिपते थे मैंने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना सीखा and all thanks to Sudha ma'am जिनकी गाइडेंस के अंडर वो कहते हैं ना मेंटोर होना ज़रूरी है. She was my first एवर मेंटोर जब मुझे मेंटोर का मतलब भी नहीं पता था ऑनेस्टली और उन्हीं की गाइडेंस में मैंने आंसर्स लिखने सीखे एसेज लिखने सीखे एंड उसके बाद मैंने शॉर्ट पोइट्रीज एंड शॉर्ट स्टोरीज लिखनी सीखी. तो जब एज एन ऑथर मेरी जर्नी थोड़ी सी अटपटी ही रही है क्योंकि टिल एज ऑफ 40 इयर्स मुझे ये नहीं पता था मुझे लाइफ में करना क्या है. After 40 years, I realized कि मुझे राइटर बनना है because that is the only thing that came naturally to me. और लोग कहते हैं कि राइटर के पास पैसे नहीं होते, you can't earn. I think that is not true. आज यहाँ अगर लिटरेचर की बात हम कर रहे हैं तो लिटरेचर पोइट्री कहानियाँ लिखना इसमें करियर तो हम लोगों ने बहुत सुन लिए इसमें पैसा भी है because that is what बात सारी पैसे पे घूम के आती है. आप करियर वो चूज करना चाहते हैं जिसमें आपको एक वो मिले सेफ्टी मिले सिक्योरिटी मिले. तो मुझे लगता है राइटर का ना राइटर्स का या लिटरेचर फील्ड का लोगों के मन में बहुत ही गलत परसेप्शन है जो आई थिंक यहाँ बैठे सभी लोगों ने ब्रेक किया है आज. तो इसी के साथ आज मैं अपनी जो दूसरी बुक है जो मैंने लिखी है जो हाल ही में अमेज़न पर रिलीज हुई है उसका मैं उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी. यूँ तो मैं औरतों के ऊपर लिखती हूँ बीइंग अ वुमेन आई लव टू राइट वुमेन सेंट्रिक बिकॉज बहुत कुछ सहना पड़ता है वुमेन को देयर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग बट पहली बार मैंने लिखी है बॉयज़ के ऊपर एक बुक to understand the other population that is most of the times misunderstood. तो इस बुक में जो मैंने लिखा है थोड़ा सा मैं पढ़ना चाहूँगी so that you have an idea what this book is all about. So with your permission, मैं प्रीफेस पढ़ना चाहूँगी so that आप लोगों को पता लगे ये बुक किस बारे में है. Since time immemorial, the fight between the genders has been a constant. We all have heard and laughed at jokes about men and women that are demeaning and humiliating. And yet these kind of filthy banter are considered trendy, a joke, however politely stated, that hurts someone's feelings isn't a joke in the first place. Part of my growing up was observing and learning from the adults around me that both the sexes were supposedly always at war with each other. To my surprise, no one needed a reason to argue. Either one felt they were the oppressed one. Gender discrimination started with color division, pink for girls and blue for boys. Then came the toys, doll for girls and car for boys. I experienced the height of gender bias when in games period in our school, and this I'm talking about my previous school, or when I was not in DAV, where girls were either allowed to play basketball or could sit under the tree and chit-chat while the boys played cricket and football.
I always rebelled against this thought process plainly because I was born a girl who was raised with conditions like every other girl, and I felt cheated. Did you know in the 70s, 80s and 90s even the professions were labelled as good for girls and essential for boys? A teaching or banking job was deemed appropriate for girls who showed an inclination towards working post-marriage. It was so because the jobs were half-day occupations and the girl would come back home in time to cook and take care of the family. While there was pressure on boys, a lot of pressure, there's always pressure on boys to be the bread earner of the family. So there was pressure on boys to become engineer or a doctor. The professions paid well and were good enough to ask for dowry from the girl's family. You know, different cultures, different mindsets. When I say this, believe me, I say this out of experience. Men and women are on the same side. And the societal norms, taboos, and irrational beliefs are on the opposite side. We don't have to fight each other. We don't have to fight each other to change our lives. Together we have to fight the root causes that create gender bias and divide God's two of the many beautiful creations, men and women. So my book, Dear Son, You Can't Stay Little Always. Life, Little Lessons You Can't Refuse. This book is an attempt to understand that part of the population who may be from Mars and least like what we expect them to be, what we women expect them to be, also deserve to be heard and seen. So I hope this book will help women to understand men a little better and men to understand themselves, because बॉयज़ को सिखाया जाता है माचो बनना, अपने इमोशंस को रिप्रेस करना और सप्रेस करना, और कम्युनिकेशन स्किल्स बराबर से हम लोग नहीं सिखाते हैं. क्यों? क्योंकि बॉयज़ के लिए कम्युनिकेशन आसान ही नहीं हो पाता. कभी भी घर में उन्होंने कभी देखा ही नहीं फादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंडफादर को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए. हमेशा एक वो होता है ना कड़ा रवैया रहना, घर के बड़े हैं. So I think we need to let our boys little loose, and we need to teach them there is other side of them, there is emotional side of them that they need to take care of, mental health that they need to take care of, apart from being macho and physically strong. और इससे पहले मैं ये यहाँ ख़त्म करूँ नोट, यहाँ किसी बच्चे ने ये पूछा था कि मैम हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, उन्हें कैसे लिखा जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए. तो मैम अगर आपकी इजाज़त हो मैं कुछ कहना चाहूँगी. I would suggest start journaling. आप जर्नलिंग करेंगे, अपने थॉट्स को लिखेंगे. थॉट्स को लिखने से आपको ये पता चलेगा where your thought stream is going and how you can move forward from there. So the best step if anybody wants to start writing is start journaling. So I would like to finish it here. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for your captivating words. Parents keep looking for parenting hacks, but there are no hacks. Everything is hard. These kids don't listen, don't understand. Yes, this is what parents are often heard uttering. True. Raising and nurturing children is a tough job, indeed, an onerous one. The two communities, parents and teachers, strive hard to accomplish it successfully through their separate fields of interaction and instruction vis-a-vis children. We have a solution to their problems. Our most revered chief guest, Dr. Nisha Peshan, who has, in fact, along with raising her own children, mentored countless other children through her progressive educational vision. She has been with DAV College Managing Committee for almost 30 years now and has a trove of more than 35 years experience in areas related to school education. A wise counsel and advice for parents and teachers has been presented by ma'am in the form of her book, Let Them Fly. It will benefit both parents and teachers to sail through the pleasant yet daunting task of raising children.
The book is a collection of 25 stories based on true life experiences about raising children and attending to their psychological, emotional, and physiological needs. I now invite Akshit for a segue into a great dramatic segment, bringing ma'am's book to life. Ladies and gentlemen, books in the hands of the deserving are often called the best of friends. This, however, might seem a bit indecorous given that they are merely sheets bound together and sandwiched between a cover. Well, that definition will be seeing certain necessitated changes within the next few minutes, for Dr. Patient's book is about to take the stage in enthralling fashion. Have you ever seen a book come alive, all its characters coming out of its pages, prancing about and talking to you as if you are indeed close friends? Well, wait no more, for we're here to present a dramatically potent display by Let Them Fly, incorporating the greatly invigorating thoughts and ideas put forward in the book and rewarding us, the audience, with a new way to imbibe and understand the very essence of literature. Hello, friends. Raising a book can be a tough job. I understand. So here I am, full of stories and anecdotes that will definitely help you in raising and mentoring your children. These anecdotes are based on true life experiences. So here, let me enliven few of my chapters that will perform in front of you. Firstly, chapter 23, The Unhealthy Comparison, a story of two sisters, Pallavi and Zoya, who have been compared by their parents. Didi? Yes? You know, I don't understand. What? That my mom is always scolding me to become like you. Maybe she's right. I know you are intelligent, smart, and even beautiful. But am I that bad? I might not top in the class. Top? You hardly pass. But I have won in sports as well as co-curricular competitions. Maybe. Why is it I have to be like you? I am different and I think I do deserve some appreciation for the efforts I make. Well, it's not my fault, is it? You see, I got the highest marks in my test. Again, I wonder why you don't study hard enough and try to improve yourself and start behaving like me. See how proud I make our parents? No two children have same nature, abilities, or potential. It is like comparing oranges with apples. Therefore, it is completely wrong to compare any two children, especially if they are siblings. The parent might think it will motivate the child, but it can have the opposite effect too. They might drift apart and it can prove to be discouraging. Now, chapter 24, the all-knowing father, a father who is imposing his own thoughts and ambitions on his poor son. You know, whenever I teach my son, he questions my abilities. I am sorry, but I don't think he understands the intellectual hierarchy we have in our family. Smartness and intelligence lies in our genes. One day, I am sure he will be an engineer just like I want him to be. I won't let him be anything else. Self-perceived notions of our own scholastic abilities and family genes are no guide to raise a child. I repeat, are no guide to raise a child. Sometimes parents' own idea about their self is an exalted one and hence it is misplaced. Let us not force our child to be the way we want them. Let them open their wings and fly into this world. Now we have chapter 25, The Child as an Exhibit. Sounds familiar? A parent is forcing his child to perform in front of others when the child is not comfortable. Why? Our parents always try to use me as a separate exhibit. I feel so uncomfortable being paraded in front of
not a mere showpiece or a trophy. They are their own children and deserve appreciation without performing in front of others. Now that was it for today. 3 chapters are enough to give you a gist of this book. Do not forget to read all the chapters because I'm sure they'll help you in raising and mentoring your children. Bye. What a mesmerizing performance it was. The book seems even more riveting now. I am getting my first copy as soon as possible. What about you, my dear audience? I believe most of you will not be able to resist yourselves from laying a hand on the book. I invite Dr. Nisha Peshin, Ms. Premlata Garg and Ms. Anju Joshi for a colloquy about the book, which has been widely acclaimed for the crucial subject it deals with. I request Ms. Aparna Eri to escort Dr. Nisha Peshin and Ms. Premlata Garg to the stage. Let's hear for Let Them Fly. So now we have the very person who has conceptualized everything, not only today in DAV Sector 14, but in all the DAVs. This love for literature is being spread by Nisha ma'am. Ma'am, we are so honored to have you here today amongst us. Just one small question because today I'm not going to ask the questions. There are so many people who've read your books and they're going to be asking. How did you like your book coming alive? Good afternoon, everybody. Well, I was in US when this book was launched on Amazon. I was not here. And after that, in Mumbai also, there was a launch, and in Delhi also. And, but frankly speaking, the caricature and the animation and putting life in the characters, I saw for the first time. Amazing, amazing. And I felt as if I'm narrating the story myself. So I think kudos to all the children and the people who were there to conceptualize it. Thank you so much, and I feel obliged and honored. Thank you so much, ma'am. Actually, why ma'am felt, but because those were her words, which we took out from the book. Her takeaways so beautifully summed up. Now, in our audience today, we have many parents, we have teachers, and many children also who have read the book, but the questions we will request from the parents and the teachers, because basically it is more about mentoring. So let's see, who would like to ask questions from ma'am? Yes, ma'am. Can we have the mic for ma'am? So our first and request introduce yourself. Good afternoon, ma'am. Myself Seema Juneja, and I'm PGT Maths. Ma'am, first of all, I would like to thank you for giving us this wonderful book, and it offers valuable lessons in both teaching as well as parenting. One thing, ma'am, I observed most of the case studies you have dealt with in the book
are regarding younger kids and junior kids, and it would be very helpful if you can give us more anecdotes which are dealing with the, let's say, challenges and crises which the parents and teachers of 11th-12th graders feel. So can we hope to see the part 2 of your book soon? Thank you so much for that, and you can sit. During the pandemic, I had some more time in my hand and I went for introspection, and that is the time when this book was conceptualized and I had the time to write it. Now, as far as book writing is concerned and publishing is concerned, many DAVians know we have a publishing house. DAV has its own publishing house, and